I am Zubin Sangvi. I am the central office POC for Axis Bank with regards to retail sales channel of Axis Securities. So I basically manage bank for retail sales team. Here we are today to understand the benefits and the features of Axis Direct as a product for you. I'll quickly share my deck. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, it is. Yes, it's visible, sir. Okay, thanks. Yeah, so why Axis Securities? We'll understand the different products plans that Axis Securities has. But for all you PBRMs, I think this first screen, if the screen has changed, uh, uh, would be very important and would be very crucial. These are the top 10 PBRMs on revenue for FY23. Rajnikant Patel from Gandhinagar cluster, 9.34 lakh of revenue is what he has earned in last financial year by pitching in a free Axis Direct demat and trading accounts to his client. Similarly, Manavendra Biswas, Arvind, Chetan, look at the revenue, from just one product called Axis Direct free demat and trading account. This is the kind of revenues that these PBRMs have earned in the entire year. Sorry? Presentation is not visible. Presentation. Second page was not visible. Is this visible Now now? fine. Yeah. If you could just put Yes, it sir, in the now. presentation mode, Zubin. I had put it in a presentation mode, but it was not somehow showing. So I think if this screen is visible, we can do it this way. Okay. Let me try again. Now is the screen visible? No sir. नहीं sir अभी भी नहीं है sir. Okay, so I Sir. think we'll do it this way. Now visible. We'll do it this way. सर स्क्रीन दिख रहा है It's सर. blank sir. It's Yes, now it's visible. blank. No sir. Visible. Okay. Friends, the Visible, screen is sir. visible. All those who are facing issues with the visibility of the screen request you to log out and log in. It could be a temporary network issue at your end. Yeah. Okay. Zubin, you may continue. Yeah. So this is what I was mentioning. Rajnikant Patel, a PBRM from Gandhinagar cluster, is generated 9.34 lakh of revenue last year. That is FY23. And I think, if I'm not wrong, the number of accounts, Axis Direct accounts that he had acquired was around 40. So with a one-time effort of pitching in Axis Direct to his customers, month on month, he has generated revenue, and that is closed into at 9.34 lakhs. Similarly, you see 8.57, 8.02, 5.88 lakhs. Understand this is by pitching Axis Direct just once, and that to a free Axis Direct demat and trading account. We are not asking the client to spend any money, reduce any CASA balance of yours. Just open a free Axis Direct account. The priority customers are directly being mapped a dealer. The dealer then gives them a call, suggests them investment stocks, and if at all the client wants to invest, the client can put in money and start investing in the markets. Right? These are the top 10 PBRMs on acquisition. So Shubham from Noida 2 cluster had acquired 205 customers. Totan had acquired 140 customers, and so on and so forth. But this is where Axis Direct plays a big role. You all would have got your revised KRAs for this financial year. You obviously would have revenue targets, CASA balance targets, and I'll explain you in this presentation how Axis Direct can help you. Adhering to all your KRAs, right? Why Axis Direct? Axis Direct, as we all know, is a 100% subsidiary of Axis Bank.
We have 20 plus investment products wherein the customers can invest for short-term, long-term in a mutual fund, in a bond, and the other products. We have a great platform to invest. We have a Ring app. We have a web-based software from where the customers can place orders. Plus, obviously, we have a call and trade facility when the dealers, especially for priority RMs, all the priority RMs by default are mapped individual dealers. We have a powerful in-house research team of more than 40 people who also run our managed accounts called CAT3. We have fantastic learning courses for the clients. So every Wednesday, every Friday, we have our webinars where our research heads or somebody from our research team gives a webinar on macro, micro, technical, and fundamental views. And we are competitive when it comes to pricing. See, we are a bank-led broker. So when it comes to comparing ourselves vis-a-vis a bank-led broker, yes, we are competitive, and how we are competitive, I'll explain in the subsequent slides. And we are in some parts, we are also competitive against the so-called discount brokers, which I'll cover again in subsequent slides. So seamless onboarding, we have 4 digital onboarding journeys. One is DIY, do it yourself, where the customer logs in onto our website and opens an account. We have a IBMB journey, wherein the customer logs in into his or her internet mobile and opens the Axis Direct account. We have a Sign app. Sign app is a mobile app which is installed in the Bank Resources mobile. So whenever a customer comes, the Bank Resource has to use the Sign app and complete the account opening journey. And we have VSIP. VSIP is a 3-in-1. VSIP is the only 3-in-1 account opening journey, wherein I'm very sure that most of you would have opened a saving account using VSIP. So once you finish the entire bank account opening journey, after that, there is a page called World of Opportunities. You just have to click there. There are 3 to 4 click buttons. Generally, they are all pre-filled pages, and the Axis Direct Demat and Trading account also gets opened. So while you are already putting in efforts of opening a saving account through VSIP, after doing that, for another 2 to 3 seconds max, if you can just take the client to the World of Opportunities page, it will take you just 3 to 4 seconds of efforts to get in 4 IPG points and Axis Direct Demat and Trading account. Right? Competitive pricing, I'll cover that in subsequent slides. Customized investment plans. We have plans right from a small case, which can start from a 2,000, 3,000 rupees to a subscription plan of 1,500 or 5,500, 10,000, plus a investment product called Smart Edge, which starts with only rupees 2 lakhs with a CAT3 of 20 lakhs, and then obviously a PMS of 50 lakhs. So basis the customer's requirement, we have a lot of investment plans. We have e-learning modules. I already covered. We have a best-in-class research, and yes, we are a full-fledged broker. So we have a team size of about 550 cluster managers who are, you guys are mapped to them across clusters, across circles, across regions. We have a dedicated dealing team of more than 600 people across 32 locations. And then because we are also a bank-led broker, we bring in a lot of credibility as well. These are some of the investment avenues, equity and derivatives. That's the core product that Axis Direct provides. Mutual funds, SIPs, managed accounts, which is Smart Edge AI, which starts with 2 lakhs, CAT3, which starts with 20 lakhs, and DPMS, which is 50 lakhs and above. We have IPOs, we have ETFs, NCDs, currency commodity derivatives, bonds, fixed deposits, structure products, plus a few other products we have added recently. Now, why would a PBRM want to sell Axis Direct, right? So for every one Axis Direct Demat and Trading account, PBRM gets 4 IPG points. So 1 IPG points is equal to 1,000 rupees of revenue. So this means if you open Axis Direct Demat and Trading account, you get 4,000 rupees of revenue. And when I say open Axis Direct Demat and Trading account for all the priority customers, the account opening charges are waived off.
right? So for a free Axis Direct Demat and trading account, you get a upfront 4,000 rupees of revenue. And this bottom line is very important. For every 1,000 rupees of brokerage generated till T plus 11 months. I mean, for T plus 11 months, whatever brokerage is generated, you get the brokerage credit every month. Right? That is where that first slide created a lot of importance. 40 accounts, 37 or 40 odd accounts by Rajnikant in the entire year. He pitched the client a free demat account. He opened the account, and then our dealers were mapped to those customers. And eventually, with the help of ASL dealers and with the help of the markets, the clients constantly started investing or trading, and eventually the revenue generated was 9.34 lakhs. This is something I think that should excite you all. 4,000 rupees of upfront revenue, and then the ASL dealing team would take care of the revenue over the period of T plus 11 months. So you can ask questions wherever you feel like, because this is a long session, and if you have any queries now, you probably would not remember it at the end of the session. So let this be a very communicative kind of a session, please. Sir, beg your pardon, one question, sir. Yeah. Sir, so T plus 11 months means 12 months almost, right? 12 months, yes. 12 So months. if a client do a transaction yeah. of 10 lakhs for stocks, so I will get the credit after a year? No, brother. The credit will come to you at the end of every month. Okay. So for just giving an example, say you have opened an account in the month of April. In the month of May, the client has say generated a brokerage of 50,000. So at the end of May, I think the ABR would probably be sending you something on your software. I'm not aware of how you see the revenue, how you track your revenues, but ASL BIU at the end of the month gives the details of all the LGLCs and the revenue credit to the ABR of bank. So 50,000 worth of revenue would be credited to you at the end of the month of May. This is a monthly credit that we give to you, not at the end of the year. Okay, sir. So in the month of June, say he has generated another 40,000. So May end you got 50,000 of credit. June end you will get 40,000 of credit. So at the end of the year, combine whatever you generate. Great, sir. Great. So this is sir, आपने ये हेलो सर हाँ, मैं बोलिए। अरिंदम बोल रहा हूँ हाँ बोलो ना। सर मेरा क्वेश्चन था जो हम लोगों का जो 1,500 का जो सब्सक्रिप्शन है और अरिंदम होल्ड योर थॉट। मैं आ रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन पे आ रहा हूँ मैं, तब पूछ लेना। अच्छा सर एक चीज बताइए, आपने यहाँ पर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट 3 और डीमैट अकाउंट 1 इक्वल टू 4 पॉइंट, तो अपने क्या मतलब है 3 डीमैट अकाउंट कितना खोलना पड़ेगा, क्योंकि तो कॉम्बाइंड अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट कंबाइंड ही होता है। 99.9% जो भी अकाउंट खोलते हैं वो ट्रेडिंग एंड डीमैट कंबाइन ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कस्टमर का डीमैट अकाउंट एक है, उसको सिर्फ दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। सी कस्टमर कैन हैव वन डीमैट अकाउंट, सॉरी वन ट्रेडिंग अकाउंट एंड मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। तो कभी ऐसा होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट है लेकिन उसको दूसरा डीमैट अकाउंट खोलना है जॉइंट नाम पे। तो कभी कभार ऐसा जब केस आता है तो वहां पे फिर 4 आईपीजी नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ डीमैट स्टैंड अलोन डीमैट अकाउंट खोल रहा है तो एक ही आईपीजी मिलेगा, व्हिच इज वेरी रेयर, व्हिच डज नॉट हैपन जनरली। मतलब अगर कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो हमको पॉइंट नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग के साथ डीमैट तो खोलना ही पड़ेगा ना उसको। तो डीमैट तो मान लीजिए उसका आईसीआईसीआई में अभी वो ट्रेडिंग अकाउंट एक्सेस में कर रहा है, वहां पे अगर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा तो 3 आईपीजी मिलेगा। और यहाँ पर कॉम्बाइंड खुलेगा तो 4 पॉइंट, मेरे को 4 पॉइंट। हाँ तो 4 मिलेगा। See, what is the brokerage revenue? 1,000 rupees. The customer, if any get transaction, then will get 1,000 rupees brokerage revenue. And not any transaction, in the sense the brokerage should be worth 1,000 rupees, right? Okay. The customer will get the brokerage.
maybe customer pays the brokerage. So we are brokers, right? For customer, any trade or transaction that he does, to explain you, let us come to this slide. Yeah. This is the brokerage structure Sir, for what priority means account. by BSDA account? Hello? So, huh? So what does mean by BSDA account? It's like BSBDA account. I'll come to that. First, let us clarify. This is a basic question. So delivery, we charge 0.45% for priority customers. Otherwise, we charge 0.50% to other customers, right? So on what 0.45% basically means is on a delivery transaction of 1 crore. Say a customer has bought shares of 1 crore, 45,000 rupees will be the brokerage generated. Right. So if the customer says takes a delivery of 10 lakhs, 4,500 rupees of brokerage will be generated. Correct. So when I say 1,000 rupees of brokerage, typically, I think the customer will have to do a transaction of about 2.5 lakh or 3 lakh. If a customer buys a delivery of around 2.5 lakhs, 1,000 rupees of brokerage will be generated. This is the delivery rack rate. Intraday in futures, we charge 0.045%. And options may we charge rupees 10 per trade or per lot, depending on whether the customer is trading online or via dealer. So if the customer Sir, can you is trading repeat the delivery part? Delivery, Hello? the brokerage is 0.45%. So just for your basic, remembrance, on a turnover of 1 crore, delivery turnover of 1 crore, if the customer is being charged 0.45%, that means 45,000 of brokerage. Similarly, in Sir, Krupa here. Hello. Sir. Let's say अगर ऐसा हो कि जैसे डीलर मैप होता है कस्टमर को and dealer gets the trading done and generates the brokerage. Then also we are getting the credit, or I mean, are there any sharing of brokerage revenue? No. There is no sharing. Whatever, see, the account has been sourced by you. Whatever brokerage that the sourced account generates, the entire credit goes to you. So there is no sharing. There is no sharing. Okay, sir. Yeah. So just to conclude this, a turnover of 1 crore in delivery, 45,000 is the brokerage. And the turnover of 1 crore in intraday and futures, 4,500 is the brokerage. And in options, it is rupees 10 per trade if the trade is done online, and is rupees 10 per lot if the trade is done via dealer. Clear? Yes, sir. This is the fee structure. See, 95 to 96% of the accounts which we open now, which actually you guys open for Axis Securities, is digital now. So, in FY22, we were about 63% digital. In FY23, we were 92% digital. And whatever start we have seen in this year, we are almost 96% digital. So all the accounts that are being sourced through digital onboarding journeys, right? So these are the bank account types: SB Easy, Prime, Prime Plus, Prestige, Priority, and Burgundy. The account opening fee, if the account comes through physical mode, is 999 for SB Easy, Prime, and Prestige customers. For Priority, the account opening fee is free, right? So whenever I talk to a PBRM, or whenever a PBRM talks to a priority customer, for you, the account opening of Axis Direct will always be free, right? So try to use that free word in your pitch, because not all your counterparts can use that word, especially those from salary channel who open the accounts to physical mode. Demat and AMC charge, first year is free for all the category of clients. For priority customers, from second year onwards, there is a discount of 25%. So from second year onwards, our charges are 750 plus GST.
For priority customers from second year onwards, the DP AMC charges would be 750 minus 25% plus GST. And for Burgundy customers, we are giving them lifetime free. Got it? So account opening is free. First year DP charges are free. From second year onwards, 25% discount on the standard DP AMC charges. Excuse me, sir. One question. From second year onwards, for the entire, like for lifetime, it will be 25% off, or only for the second year it will be 25% off for the priority customer. From second year onwards for lifetime, till the customer is here with us. Okay. Yeah? सर पहले वाला पेज एक बार दिखाइए ना, ब्रोकरेज वाला दिखाऊं या चार्जेस वाला दिखाऊं? ये चार्जेस हाँ. So brokerage one also once, please. Yeah. So I'll also share this deck with you. You can refer this. Sir, Krupal here. Sir, do we have any option with which we can offer the lower brokerage to the customer, because it is quite high compared to the market? Gopal, we have a few customized plans, but we are just about to start those plans. So usme we'll figure out. Okay, fine. Hello. Sir, Sunil here. हाँ सुनिए. सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे एक कस्टमर कितने डीमेट अकाउंट खोल सकता है, कैरी कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई HDFC में है और यहाँ पे अगर मैं लेके आता हूँ. मुझे लास्ट काउंट नहीं पता था, क्योंकि सेबी के बहुत सारे रेगुलेशन चेंजेस आए हैं पिछले 1.5 साल में. बट व्हाटएवर आई नो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज 16 at one point of time, but I'll have to check that. Okay. Okay, can we move ahead? Yes, sir. Right. So, as I say, we have a lot of customized plans for our customers, and one of them is subscription plans. So, subscription plans in our normal market language is nothing else but advanced brokerage, right? Jahan pe the customer, rather than paying a brokerage when he or she trades, will opt for an advanced brokerage plan to get a reduction in brokerage slabs. So first, why are the subscription plans important? Because they give you a higher IPG point. So as of now, what we all know is for a free Axis Direct account, you guys get a upfront 4 IPG points, correct? Now with subscription plans, the IPG points will also increase, right? तो एक तो आपको higher IPG points मिलेंगे, higher आपको revenue मिलेगा. Second is upfront revenue. Now why I say upfront revenue is whenever you collect a advanced brokerage, it is as good as a brokerage, it is as good as a revenue. So that 1,000 rupees of revenue that the ASL was supposed to give you month on month, you're already collecting a certain brokerage upfront. So you get a higher IPG point, you also get a upfront revenue as well. Customer retention. Now why customer retention? Because these customers who generally opt for advanced brokerage or subscription plans are market customers. Somebody who's already paying us brokerage in advance is surely going to trade with Axis Securities. And once the customer starts trading, once the customer starts using the platform, once the interaction with the dealing team starts, what we have observed is the customer tends to eventually start investing more in the markets through Axis Securities. And once the customer starts investing more, the customer tends to retain with us. And when I say retain with us, retain with the bank as well, right? And because these customers are market customers, there are very higher chances that the month-on-month revenue generation that the customers will do for you is high, right? As I am once again at the cost of repetition, Rajnikant with just 37 or 40 accounts has generated 9.34 lakh of revenue. So there are a lot of market customers which he would have acquired, correct? So these are our subscription plans. AP 1500, NN 5555 and DSP 10,000. So the first column that you see is prosperity plan, that is without any subscription plan. So see in this this EDM, I would want you
to focus on the fourth row. This can be your pitching point to the customer. The fourth row is the savings wala row. Right? Can increase the screen size, sir? Yeah. Okay. So this is the row that I'm saying. Just focus on that. So account opening charges are obviously free. With the 1500 subscription plan, that means the customer pays us 1500 rupees as advance brokerage while opening the Axis Direct account. The customer gets a 30% discount on brokerage. So when I say 30% discount is on Axis Securities standard rack rate, not the priority brokerage slab. So what our standard brokerage slab is 50 paisa for delivery, 5 paisa for intraday and futures, and option remains the same. So with 30% discount on 50 paisa of delivery, the brokerage comes to 0.35 in cash, that is delivery. In intraday and futures, the brokerage Sir, you are not audible. comes to 0.05. 30% discount. Am I audible now? Yes, sir, what your voice is lagging, sir. Just a sec. Is it clear now? Yes, sir. So 1500 subscription plan gives you a 30% discount on brokerage. Similarly, the other plan is 5555 plan. The 5555 plan is our best selling subscription product. And you can mute. Yeah. So in 5555 plan, the customer gets 60% discount on our rack rate. So if a customer pays us 5555 as an advance brokerage, the delivery brokerage is 0.20%, and the intraday brokerage or the future brokerage is 0.02%, which is a 60% discount. So when somebody was asking, सर ये समझ में नहीं आया कि सेविंग्स में जो आपने जो बोला ₹999 प्लस 30% डिस्काउंट, ये समझ में नहीं आया एक्चुअली. So हम typically 499 या 999 चार्ज करते हैं कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग के लिए, है ना? यदि अगर किसी कस्टमर ने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया 999, हमने हायर साइड पे देखा है, इट कैन बी 499 आल्सो अगर वो ऑनलाइन डिजिटल मोड से आता है. तो एक तो उसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज बच रहा है, यू नो ही इज नॉट पेइंग अस 499 और 999, प्लस उसको 30% डिस्काउंट मिल रहा है ब्रोकरेज पे. अगर वो सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेता तो उसको 50 पैसा एंड 5 पैसा लगता ब्रोकरेज, एंड उसको 499 या 999 देना पड़ता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज. राइट? 999 is the opening fees plus 30% is the brokerage. That is the customer will get the advantage, correct? Yes. So that's why you can add plus one is mentioned, sir. Plus 999 plus 30% is ordinary customer we will charge for the customer, correct, sir? But because of the priority. So what if the customer is not opting for and I am not talking about priority customer because priority customers have account opening free, but if a general other category of customer opts for a normal account, we will charge him 999 or 499 depending on which way he is onboarded, and we'll charge him 50 paisa and 5 paisa. Because he has opted for a 1500 subscription plan, we are giving him 30% discount on brokerage, and we are waiving off the account opening charges. So that is the saving for the customer. Right? Sir, Krupa, can you just explain the complementary delivery turnover with 3 lakh? How does it work? ठीक है. Let me do this way. Hello. Sir. हाँ. Sir, CGTL क्या है? CGTL? नहीं दिया. What is the meaning of CGTL? चलो मैं वही बता रहा हूँ. मैं एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको. सो अकाउंट ओपनिंग फ्री है. अब
ये कॉम्प्लीमेंट्री डिलीवरी टर्नओवर का मतलब ये है कि for the first 3 lakh rupees of transaction or turnover that the customer will do, we will not charge the customer any brokerage. Sir, can you repeat Okay, again? and after that he will be charged. And post that the customer will be charged at 35 the discounted brokerage, that is 35% and 35%. Sir, can you repeat 3 lakh delivery turnover? What is that? So let us take a example. If the customer has opened an account, say on the 1st of May, right, with a subscription plan of 1500. Okay. Correct. So from 1st of May, say for 3 months, 4 months, the customer in total has done a delivery turnover of 3 lakhs. So कभी 40,000 का स्टॉक लिया, 30,000 का स्टॉक बेचा, फिर 50,000 का लिया, वैसे करके the sum up is 3 lakhs. For that first 3 lakh of delivery transaction that the customer does, we are not going to charge him any brokerage. Okay. Hence we say we are giving a complimentary delivery turnover, right? And post the exhaustion of 3 lakh of delivery turnover, the customer will be charged the discounted brokerage of 0.35 and 0.035. After 1 year? No, not after 1 year. After the exhaustion of CDTL. See, this 1500 plan is the validity is only for 1 year. करेक्ट. सो कस्टमर ने अगर पहले 5 दिन में ही 3 लाख का टर्नओवर कर दिया तो 6वें दिन से उसको डिस्काउंटेड ब्रोकरेज मिलेगा. अगर कस्टमर ने ये 3 लाख एग्जॉस्ट करते करते 9 महीने निकाल लिए तो आफ्टर वट एवर बैलेंस ऑफ 3 मंथ्स इज लेफ्ट, वहां पे द कस्टमर विल एंजॉय दिस डिस्काउंटेड ब्रोकरेज. द वैलिडिटी ऑफ द एंटायर प्लान और द डिस्काउंटेड ब्रोकरेज इज ऑफ ओनली 1 year. Right? So it is applicable for all the plan. It is applicable for all the plan, all the subscription plan. No. There is a difference. So first understand 1500 ka replica is the 10,000 plan. So in a 10,000 plan, yeah. So in a 10,000 plan, as the name suggests, we take 10,000 rupees worth of advance brokerage. Over here, the customer gets an 80% discount on brokerage. So from 50 paisa in delivery, the customer's brokerage is down to 10%. And in intraday, the customer's brokerage is down to 1%. So on a transaction of 1 crore in intraday, the customer will be charged a brokerage of 1,000 rupees. Right? This again is a 1 year product. It is an auto renewal product. Over here, the complimentary delivery turnover is 25 lakhs. So this 10,000 plan is typically for those traders, and I won't even say short-term investors, typically for traders who would probably trade in intraday, heavily trade in futures or in options. Right? Now again, 10,000 plan is a 1 year plan. The 5555 plan is the 5555 plan is, because I said it is a best selling plan. The reason is 5555 plan is for 10 years, and I'll explain you why. Over here, the customer pays us 5555 as advance broker. Hello. Yeah, sorry, I think. Am I audible? Yes, sir. So 55. Yes, please pay attention to this, because I think subscription plans are going to help you achieve your revenue target. Hello. Hello. Hello.
Zubin, hi, Abhishek here. I think you got muted probably. Yeah. Zubin, are you there in the Yeah, session? yeah. Yeah, I think you got muted, yeah. Okay. Hello. Yeah. Hello. Yeah. सर ये CTTL का मतलब क्या है? समझा रहा हूँ, ये 5555 में समझाता हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर ने अगर एक मई को अकाउंट खोला, ठीक है, 5555 is the advance brokerage that he has paid. The customer has a complimentary delivery turnover, which means 12 लाख रुपए तक डिलीवरी में कस्टमर अगर टर्नओवर करता है, हम उसको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे फॉर 1 year. So from 1st May till 30th April 2024, right? अगर कस्टमर ने कस्टमर सॉरी अच्छा 1 year 10 year मैं वही समझा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री डिलीवरी टर्नओवर का लिमिट है 1 year का, लेकिन जो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज है जो 20 पैसा एंड 2 पैसा है वो 10 साल तक रहेगा यहाँ पे. Unlike the 1500 and 10,000 plan, 1500 on 10,000 plan would get auto renewed after the end of the first year. Customer will get a mail. If the customer does not want to continue with the plan, the customer has to select that link. यहाँ पे the plan stays intact for 10 years, right? And hence this is one of the highest selling plans that we have. Customer को यहाँ पे 60% turnover discount for 2 year and percentage discount for 10 year. Turnover discount for 1 year. Okay. सारे plans में this is the row that you have to refer. सारे plans में delivery turnover limit is only for 1 year. अगर customer ने for example in 5555 plan customer ने एक साल में सिर्फ 7 लाख या 8 लाख का delivery turnover किया है, तो 5 लाख का delivery turnover जो उसने नहीं किया, he will miss out on that. After the end of the first year, उसको 20 पैसा and 2 पैसे का brokerage लगेगा on every transaction. Correct? Now the fun part is the highest IPG points, higher IPG points. So as we know, सुबिन सर एक क्वेश्चन. हाँ सर ये जो 5555 वाला जो अमाउंट है वो एवरी ईयर कस्टमर पे करेगा या एक ही बार पे करेगा? 5555 एक ही बार पे करेगा और वो ये प्लान 10 साल तक चलेगा. 1500 और जो 10,000 का प्लान है वो कस्टमर को हर साल पे करना पड़ेगा. ओके. अगर उसको रिन्यू नहीं करना है तो उसको मेल आएगा, उस मेल पे उसको ना सिलेक्ट करना है इफ इट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू. बट 5555 एक बार ले लिया तो 10 साल तक उसको डिस्काउंटेड ब्रोकरेज मिलेगा. राइट? ओके. IPG. So for every free access direct account upfront. हाँ सर ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के हिसाब से ये 5555 प्लान है, ये ऐसे ब्रोकरेज चार्ज आप लोग इन एडवांस ले रहे हैं? ये ब्रोकरेज एडवांस ले रहे हैं. ब्रोकरेज एडवांस. ओके. सर ये व्हाट इज MTF rate, what is that? Hold on. I'm glad you guys are looking at the screen. Just hold on. So I am saying IPG points. So this is very crucial for you, right? 4 upfront IPG points हम देते हैं normal account के लिए, right? Now for a 1500 subscription plan, because you are taking a 1500 worth of revenue upfront or a brokerage upfront from the client, 1500 revenue is as good as 1.5 IPG points, right? 1 IPG is equal to 1000 rupees. So 1500 rupees is equal to 1.5 IPG point. So 4 IPG point on opening a Axis Direct Demat and trading account, on 1.5 IPG on 1500 worth of advance brokerage. So for every 1500 subscription plan, आपको 5.5 या 5.5 IPG point मिलेंगे. Similarly in 5555, because you are bringing in 5,500 of advance revenue, which is equal to 5.5 IPG plus the 4 IPG on opening the Axis Direct account. So 4 plus 5.5 is 9.5 IPG. And for a 10,000 plan, same logic, 10,000 ka revenue upfront, which is equal to 10 IPG and 4 IPG on Axis Direct account. 4 plus 10 is 14 IPG. Right? So एक
10,000 का सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आपने बेचा तो आपको 14,000 रेवेन्यू या 14 IPG पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस वंस द कस्टमर एग्जॉस्ट द कॉम्प्लीमेंट्री डिलीवरी टर्नओवर लिमिट, वो जो भी ट्रेड करेगा उस ट्रेड का भी ब्रोकरेज आपको मिलता रहेगा टिल 11 मंथ्स। नाउ मैंने अगर मैं आपको सर ब्रोकरेज का रेवेन्यू मिलेगा उसमें जो ये 3 लाख 12 लाख और 25 लाख वाला जो है वहां तक ट्रेड करेगा तब तक तो अब कुछ नहीं मिलेगा ना, उसके बाद ही अपने को मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। ओके राइट। अभी माय क्वेश्चन क्या सर फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव होता है, एक होता है इक्विटी जहां पे डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेड होता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स। आई थिंक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर मैं आप यहाँ समझाने जाऊंगा तो आई थिंक विल हैव टू इट विल टेक लॉन्ग, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन जस्ट इज डेरिवेटिव ट्रेड ऑप्शन जहां पे लॉट, जैसे मुझे अगर आज रिलायंस का स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे रिलायंस लेना है और मेरे अकाउंट में समझो 10 लाख है, तो 10 लाख डिवाइड बाय व्हाटएवर रिलायंस का प्राइस है, आई कैन बाय दैट क्वांटिटी, राइट। एंड वो पड़ा रहेगा जब तक मुझे बेचना नहीं। लॉट में फिर कुछ शेयर आते हैं 6,000 5,000 लमसम शेयर होते हैं ना उसमें, लॉट में लमसम शेयर होते हैं। इसमें लॉट साइज आती है, तो समझो रिलायंस की लॉट साइज होगी 100 की, तो एक साथ मुझे 100 रिलायंस लेने पड़ेंगे, बट आई डोंट हैव टू पे द एंटायर प्राइस, देयर इज अ मार्जिन अमाउंट दैट आई हैव टू पे, एंड उससे आई कैन प्ले अराउंड, जब मुझे बेचना हो मैं बेच सकता हूँ। इट्स अ डीपर कांसेप्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इट्स अ सॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड। तो फ्यूचर में और इंट्राडे में हम जनरली सब जगह पे सेम ही ब्रोकरेज ऑफर करते हैं, राइट। कमिंग टू, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, यू नो 14 IPG पॉइंट्स अगर मैं आपको दे रहा हूँ या एक्सिस सिक्योरिटी से आपको मिल रहा है, मैं आपके बैलेंसेस में से सिर्फ 10,000 रुपए ले रहा हूँ, राइट। मैं अगर आप अपने किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को 10,000 का प्लान देते हो बैंक कस्टमर को, मतलब आप उसके बैलेंसेस से सिर्फ 10,000 रुपीज ही ASL को दे रहे हो। So when 10,000 rupees of deduction from your balance, you are getting 14,000 worth of IPG revenue. I would not compare or I would not take names of any other third-party products that you guys sell, but 10,000 का चेक या 10,000 ट्रांसफर करके 14 IPG पॉइंट्स कहीं और मिलता नहीं है मेरे हिसाब से। आई एम जस्ट गिविंग योर थॉट, राइट, बाकी आप समझ लो। MTF is what somebody asked me. So MTF means margin trade funding. Typically स्टॉक मार्केट्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लिमिट्स पे खेलना। सो अगेन इफ कस्टमर हैज 5 लाख वर्थ ऑफ मनी एंड ही और शी वांट्स टू बाय स्टॉक्स वर्थ से 10 लाख, राइट। अब 5 लाख ही पड़ा है तो 10 लाख का स्टॉक ले नहीं सकते हैं। इस केस में एक्सिस सिक्योरिटीज ऊपर के जो 5 लाख रुपए हैं वो प्रोवाइड करता है कस्टमर को फिक्शनली, और उस पे हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। So the customer depends also on the category of stock, but if the customer say wants to buy a stock more than what he has in his bank account, we have a provision called MTF, wherein the customer can be given that limit, and we charge 18% per annum for that exposure, right? So if say this customer जिसका 5 लाख रुपया का exposure जिसने लिया है, if that customer is constantly in MTF for say a year, that is 60 lakh का उसका डेबिट हो जाएगा। 60 into 1.5% करो या 5 लाख into आप 18% करो। A lot of your customers who would be trading with competition and not with Axis Securities would be doing this, especially customers who are trading with standalone brokers, right? और यहाँ पे so 18% से we are giving a discount if a customer is opting for a 1500 subscription plan, उसको MTF rate हो जाएगा 15.99%. In 5555 and 10,000 plan, the MTF rate is 13.99%. So 18% का either it is 16% or 14%. Percentage में it does not appear that big amount, but just assume that if a client is taking an exposure of 20 lakhs or 25 lakhs throughout the year, even a marginal difference of 0.5% will also matter a lot. Hello. Yeah.
हाँ but it's annualized interest মানে सालाना ये उनके पास इंटरेस्ट से इज लेंगे एनुअल क्या एनुअल इंटरेस्ट इज एनुअल एनुअल लेकिन चार्ज मंथली होगा चार्ज मंथली होगा Hello, sir, Amit this side. Yeah, man. Actually, I just want to know कि हम कितना टाइम्स लिमिट देते हैं कस्टमर को उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग. ये रोज चेंज होता है हमें, बट इन ए ग्रुप स्टॉक एज अ अम्ब्रेला व्हाट आई कैन से इज हम 3 से 4 टाइम्स लिमिट दे सकते हैं इन ए ग्रुप स्टॉक्स, बट बिकॉज इट कम्स अंडर आरएमएस डिपार्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो रोज एक नया गाइडलाइन आएगा, रोज सर्कुलर आएगा, रोज चेंज होगा, बट मामूली सा ही चेंज होगा बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी, बट फॉर अ ए ग्रुप स्टॉक टिपिकली 3.5 to 4 टाइम्स लिमिट मिलता है. Okay. On an average we can say कि 3 टाइम to 4 टाइम आपको लिमिट दे देंगे. In a A group stock subject to RMS approval. सर ये CDTL का मतलब क्या है? हाँ? CDTL का मतलब? CDTL का मतलब है C stands for complimentary, मतलब फ्री, डिलीवरी टर्नओवर, मतलब तुम 3 लाख तक का या 12 लाख तक का या 25 लाख तक का तुम डिलीवरी टर्नओवर करो, हम तुमको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, वो हम उसमें ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे. And if somebody is smart enough, he will understand why हम लोग ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहे हैं. हमारा स्टैंडर्ड रैक रेट है 5 पैसा एंड 50 पैसा, राइट? हमने एडवांस ब्रोकरेज लिया है, तो डिस्काउंट ट्रेड अगर वो 3 लाख रुपए का डिलीवरी टर्नओवर करता है ऑन 50% या 50 पैसा ऑफ ब्रोकरेज, वो 1500 का ही ब्रोकरेज होने वाला है. इसलिए मैं उसको 3 लाख तक ब्रोकरेज चार्ज नहीं. 8% is like a GST that we are charging. Yeah. Hello. We are charging in that way. GST that we are charging in form of MTF. I'm not for the normal account. Normal for account, the rate MTF of interest is 18%. 18%. 18% we are charging in for the normal account. It's just like a GST or what? Because 18% we are charging for the normal account and 1500 में 15.99 and 5555 में 13.99 and 10,000 में 13.99 again. So for the normal account that we are charging is 18%, just like a GST or what? Is there another charges that we are charging? नहीं, so this will be interest charge. Interest के ऊपर GST नहीं है. Yeah, there is no GST ना? Interest के ऊपर GST नहीं. सर इसकी सर रिन्यूअल फीस क्या होगी सर नेक्स्ट ईयर से फीस क्या है सर इसकी 555 की है इनकी? 5555 प्लान 10 साल का प्लान है, तो ये नेक्स्ट ईयर ये रिन्यू नहीं होगा. ये एक बार ले लिया तो 10 साल तक चलेगा. 1500 और 10,000 का नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल अगेन इज द सेम. 1500 फिर से देना पड़ेगा, यहाँ पे 10,000 फिर से देना पड़ेगा. ओके. सर हेलो सर, ये जो अभी बताया 10 साल का वो फिर से बताएंगे? 10,000 प्लान, ठीक है. यहाँ पे कस्टमर से हम एडवांस ब्रोकरेज ले रहे हैं ऑफ 10,000, वेरिन कस्टमर को हम 80% डिस्काउंट दे रहे हैं ब्रोकरेज पे. सो 50 पैसे की जगह पे कस्टमर का डिलीवरी में ब्रोकरेज हो जाएगा 10 पैसा, और 5 पैसा जो इंट्राडे और फ्यूचर का ब्रोकरेज था वो हो जाएगा 1 पैसा, राइट? मतलब अगर कस्टमर 10 लाख रुपए का इंट्राडे में ट्रेड करेगा तो उसको ब्रोकरेज मात्र 100 रुपया लगेगा, ठीक है. यहाँ पे कस्टमर को हम 25 लाख वर्थ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिलीवरी टर्नओवर लिमिट दे रहे हैं. मतलब अगर कस्टमर 25 लाख तक की डिलीवरी की टर्नओवर करेगा तब तक हम उसको ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे, और उसके बाद कस्टमर जो भी ट्रांजैक्शन करेगा हम उस पे 10 पैसा और 1 पैसा ब्रोकरेज लगाएंगे. The validity of this plan is for 1 year. The validity of CDTL is also for 1 year. 1 साल खत्म होने के 1 महीने पहले कस्टमर को मेल आएगा एक्सिस सिक्योरिटीज के बैक ऑफिस से, your plan is going to expire. If you do not want to continue the plan, please select the link. कस्टमर को अगर कंटिन्यू नहीं करना है वो लिंक सिलेक्ट करेगा. So 25 lakh, Jovin sir, for 25 lakh he has to finish in 1 year,
यस यस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो 10,000 का प्लान है ना, 10,000 का प्लान सिर्फ ट्रेडर्स ऑप्ट करेंगे। 10,000 का प्लान शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स भी ऑप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्टॉक ले लिया और मार्केट ने साथ नहीं दिया तो बेचना भी मुश्किल हो जाएगा ना। And sir, this is a margin trading facility. MTF rate calculated on with delivery or how does it work? MTF? See, MTF is basically for delivery. So when I say the customer takes an exposure for delivery, not for futures options or intraday. है ना, उसको आज उसके पास पैसा नहीं है, वो आज ले लेगा पैसा, वो एक्सपोजर पे स्टॉक ले लेगा, और जब भी उसको बेचना हो, दैट कैन बी से 1 month, 2 month, 3 month और टिल 365 days, वो स्टॉक के साथ एक्सपोजर के साथ होल्ड करेगा स्टॉक को। तो ये डिलीवरी पे ही MTF होता है। So we charge for 13.9%. What is that? In 1500 we charge at 15.99%. So अगर उसका समझो 10 लाख का एक्सपोजर है, पूरे साल 10 लाख का उसका एक्सपोजर है, तो 10 लाख पे 13.99%। जो भी अमाउंट होगा वो उसको इंटरेस्ट लगेगा। Divide by 12. अच्छा, अभी whatever questions you have with regards to subscription plan, park it, हम इसको बाद में लेते हैं, because there are lot of other plans, otherwise वो cover नहीं कर पाएंगे, right? It's a very new plan that we have launched. I would be very sad if you would not have heard about this plan. It's called Axis Freedom Plan. We have launched this plan on 16th of February this year. Yeah, we have launched this plan on 16th of Feb this year, and the beauty of this plan is made for increasing the SA balances of bank. The core function or the core reason for the existence of this plan is to increase SA balance of Axis Bank. This is what I mean by that. अगर ये स्क्रीन आपको दिख रही है तो इस पूरी स्क्रीन पे just focus on the image in the center which says money is coming from some bank to Axis Bank. सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ सर, जो मार्जिन मनी आपने बोले एक कैटेगरी में मार्जिन मनी हमने 4 times देते हैं, तो यदि मैंने 5 लाख का हमारे पास कैश अकाउंट में बैलेंस था, मैंने 20 लाख का एक कैटेगरी के शेयर्स को परचेज किया मार्जिन मनी में, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 13.99 था वो मेरा लगेगा, लेकिन ये मैं कितने दिन तक होल्ड कर सकता हूँ पैसे को सर? 365 days। अच्छा, 365 डेज के बाद क्या होगा? एक बार पोजीशन, हमारी भाषा में हम बोलते हैं पोजीशन, एक बार स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब वो एक बार यू हैव टू क्लियर योर डेबिट। मतलब आपको 365 डेज हो गए, तो जितना मार्जिन मनी लिया उतना का शेयर ऑटो सेल हो जाएगा? यदि मैंने उतना पेमेंट कर दिया तो मेरा शेयर मेरे पास रह जाएगा? अगर आप यस परफेक्ट, अगर आपने पेमेंट कर दिया पूरे एक्सपोजर का या डेबिट का, तो वो आपका शेयर हो जाएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वरना फिर एक बार आपको सेल करना पड़ेगा। वो पूरा एक बार सेल करना होगा साल भर में, और उतने अमाउंट का मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ लगेगा? यस, पर मंथ लगेगा। साल ये पर मंथ लगेगा, लगते हैं ईयरली लगते हैं? पर मंथ लगता है। तो जैसे 18% हम चार्ज करते हैं साल का, महीने का हो जाता है 1.5%, 1.5%। नहीं तो 13.99 था ना सर 10,000 वाले? 13.99 साल का है, तो 13.99 को आप डिवाइड कर दो 12 महीने से, जो भी कुछ आएगा 1.2, 1.3 या 1.1%, 1.1% लगेगा 15 लाख पे हर महीना। हर महीना 15 लाख पे हर महीना लगेगा 1. उतना का मुझे इंटरेस्ट ऑटो डेबिट अकाउंट से हो जाएगा, सेविंग अकाउंट से? यस ऑटो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट तो सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होगा ना सर? सेविंग अकाउंट से होगा ना, सेविंग अकाउंट से ही होगा आपका। हमारे पास ऐसी कोई ये प्रोविजन नहीं है कि एक्सिस सिक्योरिटीज में आपका पैसा पड़ा है। हमको बोले तो आप नहीं आए हैं मैडम, आई हैं। और जब मैं ये चीज
उसको मैं सेल आउट करूंगा तो फिर से 1 साल के लिए मार्जिन मनी ले सकते हैं? ले सकते हो आप। ये कितने मतलब अमाउंट है? जैसे मैं नॉर्मल प्रायोरिटी अकाउंट यदि कस्टमर खोले हैं सर और 10,000 का मैंने डीमेट अकाउंट लिए हैं, तो वो कितने मतलब कितना कोई अमाउंट लिमिट भी हो ना सर कि इस कस्टमर को हम इतना ही दे सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे देखो कोई लिमिट नहीं है, बट अगर कोई बड़ा अमाउंट की बात करता है, जैसे कोई बोलता है कि यार 50 करोड़ रुपए मुझे एक्सपोजर दो, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम का, ऐसा जब बड़ा केस होता है तो फिर वो केस टू केस बेसिस हमारी रिस्क टीम है, हमारी डीलिंग टीम उसको देखती है। नहीं, हम जैसे एक कैटेगरी के 5 शेयर को मैं 5 शेयर को 2-2 लाख का मतलब 10 लाख का मैंने परचेज किया, 2-2 लाख 10 लाख थे हमारे ऐसा पास। कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। अगर कोई कस्टमर आके बोलता है कि मैं 2 करोड़ का रिलायंस लूंगा, मैं 4 करोड़ का HDFC लूंगा, मैं 8 करोड़ का L&T लूंगा, कोई लिमिट नहीं है। कस्टमर के पास पैसा है, अगर वो हमारे रिस्क में फिट होता है तो हम एक्सपोजर दे देंगे उसको। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, इस पे ध्यान देना। दिस इज फ्रीडम प्लान। नाउ व्हाट डज फ्रीडम प्लान मीन इज, एनी ऑफ योर ETB कस्टमर, अगर आपका कोई ETB कस्टमर है जिसका एक्सिस बैंक में पैसा है, अकाउंट है, अगर if he or she transfers funds from non-Axis Bank to Axis Bank, Axis Securities उसको ब्रोकरेज में डिस्काउंट देगा और लाइफ टाइम सॉरी ब्रोकरेज में क्रेडिट देगा और लाइफ टाइम उसको ब्रोकरेज डिस्काउंट देगा। समझे? If a customer, if a ETB customer or even a NTB customer जो नॉन एक्सिस बैंक से अपने एक्सिस बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है एट द टाइम ऑफ एक्सिस डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग, हम उसको कुछ ब्रोकरेज डिस्काउंट देंगे और कुछ ब्रोकरेज क्रेडिट देंगे। ठीक है? कस्टमर नीड्स टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम अ नॉन एक्सिस बैंक अकाउंट टू एक्सिस बैंक अकाउंट टू अवेल द ब्रोकरेज क्रेडिट एंड होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स। ये सर ये फंड सेविंग अकाउंट में ही लाके रखना है या एज अ मार्जिन अमाउंट भी रखना पड़ेगा? मार्जिन अमाउंट का कंसेप्ट भी नहीं है, सिक्योरिटीज में पैसा लेना सेविंग ही अकाउंट में ही है, रखना है। यस यस। तो और ऐसा कुछ क्राइटेरिया कि इतने दिन तक, मिनिमम इतने दिन तक रखना है या फिर 1 या 2 दिन का ट्रांसफर भी चलेगा? कुछ भी नहीं है। सुन तो लो यार, अभी तो प्रोडक्ट चालू किया, प्रोडक्ट रुको सुनो। यस सर, ये स्लैब है, यू नो, दिस इज द स्लैब। सो फॉर एग्जांपल, एक आपका एग्जिस्टिंग ETB कस्टमर है ना, आपने उसको पिच किया एक्सिस डायरेक्ट फ्रीडम प्लान। आप उसको बोलते हो कि सर, आई होप एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी और एल्स आई विल स्विच टू इंग्लिश। You just pitch the customer Axis Direct Freedom Plan and you tell him or her that sir, if you can transfer say 2 lakh rupees from your other bank to this account, तो जैसे आपका अकाउंट खुलेगा सर, you will get a free discount, brokerage discount of 3000, मतलब 3000 रुपीज तक तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा एक्सिस सिक्योरिटी से, या लगेगा तो रिवर्स हो जाएगा रादर। एंड लाइफ टाइम आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ब्रोकरेज। Right? So whatever I've understood, a new priority saving account opens with a check of 2 lakh rupees. Correct me if I'm wrong. एक अगर प्रायोरिटी का अकाउंट खुलता है तो 2 लाख के चेक के साथ खुलता है इन बैंक, राइट? तो आपका तो बाय डिफॉल्ट हर एक NTB कस्टमर जो है बैंक अकाउंट, न्यू टू बैंक प्रायोरिटी कस्टमर, उसको एक्सिस सिक्योरिटीज 3000 रुपए का ब्रोकरेज क्रेडिट दे रहा है और 40% डिस्काउंट दे रहा है ऑन ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम। मतलब 50 पैसे का उसका ब्रोकरेज हो जाएगा, 30 पैसा इन डिलीवरी एंड 3 पैसा इन इंट्राडे एंड फ्यूचर्स, प्लस मैं 20% डिस्काउंट उसको दे रहा हूं लाइफ टाइम ऑन MTF रेट्स। तो जहां पे वी वर टॉकिंग अबाउट 13.99 एंड 15.99 ना, यहाँ पे इन फ्रीडम प्लान उसका MTF रेट फॉर लाइफ टाइम विल बिकम 14.40%। ब्रोकरेज हो जाएगी 30% एंड 3%, 30 पैसा एंड 3 पैसा, एंड MTF हो जाएगा उसका 14.40 फॉर लाइफ टाइम। प्लस उसको मैं शुरू में ही, उसने कुछ नहीं किया, एक्सिस सिक्योरिटीज को 1 रुपया नहीं दिया, उसने सिर्फ 2 लाख रुपया किसी और बैंक से ट्रांसफर किया अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट में, तो उसको 3000 रुपए का डिस्काउंट, ब्रोकरेज डिस्काउंट मिल रहा है इनिशियली। उसका मतलब है कि मैं ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं करूंगा उसको 3000 रुपए का, या चार्ज करके रिवर्स दे दूंगा और उसको मैं लाइफ टाइम ये सारे डिस्काउंट दे रहा हूँ। What is in it for you, bank, right?
सेविंग अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा. दिस इज द मेन कोर आइडिया बिहाइंड दिस द एंटायर प्रोडक्ट. आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा बिकॉज आप पैसा मंगवा रहे हो किसी और बैंक से एक्सिस बैंक में, राइट? नाउ historically what we have seen is if a standalone bank account is linked with the Axis Direct Demat and Trading account, this account becomes a primary account for the customer because यहाँ से फिर वो investment equity में investment करता है, SIP शुरू करता है, and slowly but surely इस account को primary account बना लेता है, right? Better quality accounts because if the customer is taking that much of efforts to transfer money from some other account to Axis Bank account because he or she is getting discount on Demat account, मतलब ये कस्टमर ट्रेड कर सकता है या ट्रेड करेगा. और अगर कस्टमर ट्रेड करेगा तो अगेन T+11 मंथ तक ब्रोकरेज आपको मिलेगी उसकी, राइट? हेल्प्स इन गेटिंग हायर इनिशियल फंडिंग चेक. जैसे आज बिकॉज 2 लाख इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर अ प्रायोरिटी एनटीबी. अगर आप कस्टमर को बोलोगे सर आप 2 लाख करोगे तो आपको मैं 3,000 तो फ्री दे ही रहा हूँ, आप अगर सर 5 लाख करते हो तो आपको 10,000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10,000 तक की आपको ब्रोकरेज फ्री हो जाएगी, राइट? अ पिच पॉइंट, जस्ट अ पिच पॉइंट. अब 2 लाख पिच करो, 3 लाख पिच करो, 4 लाख पिच करो, 5 लाख पिच करो, but that can help you get a higher initial funding check, increase in PPC, customer stickiness, क्योंकि अब कस्टमर इसी अकाउंट से ट्रेड भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो there is a higher chance of customer sticking around with you and not shifting the banks. And IPG जो 4 IPG जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है. Plus because freedom plan में we have seen a lot of customers come to trade, तो यहाँ आपका जो T+11 month का brokerage cycle है ना, there is a very high chance of getting a churning brokerage on a regular basis. For the customers, the benefits are there is free brokerage up to 10,000, 5 lakh is our highest slab, उसके ऊपर 10,000 rupees का discount है. Minimum 20% discount for normal customers. So for other category of customers barring priority and burgundy, हम 20% discount दे रहे हैं brokerage पे, तो 50 पैसे का हो जाता है 40 पैसा. But for priority and above customers हम 40% discount दे रहे हैं, तो 50 पैसे के जगह पे 30 पैसा हो जाएगा delivery में brokerage, right? Fund remains in customers Axis Bank saving accounts. उसको कोई Axis Securities को पैसा नहीं देना है, वो सिर्फ जो अकाउंट जो Axis Bank का सेविंग अकाउंट उसने Axis Direct के साथ लिंक किया है, उस सेविंग अकाउंट में वो पैसा रखे, जब उसका ट्रेड करने का मन करे वहां से वो पैसा उस पैसे से वो शेयर खरीदे, और जब भी वो शेयर बेचेगा या जब भी डिविडेंड भी आएगा तो वो इसके इस Axis Bank के अकाउंट में ही आएगा, राइट? वेवर ऑफ account opening charges and plus 20% discount on margin trade. And why it is good for Axis Securities, better quality customer आएंगे तो trade होगा, and because as a broker our core business is generating brokerage हमारी generate होगी. Okay. How does this plan work? ये थोड़ा सा technical है. I would want your mapped ASL resource to come and train you on this, but मैं आपको brief दे देता हूँ. कस्टमर ने अगर आज एक्सिस डायरेक्ट का डीमैट अकाउंट खोला है एंड ही सेज कि नहीं आई एम इंटरेस्टेड इन फ्रीडम प्लान, तो T-15. सो फॉर एग्जांपल इफ टुडे इज 1st of May एंड टुडे द कस्टमर इज ओपनिंग एक्सिस डायरेक्ट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, 15th of April से लेके दैट इज T-15, राइट? अकाउंट नहीं खुला था 15 अप्रैल को, अकाउंट खुल रहा है 1 मई को, लेकिन मैं 15 अप्रैल से लेके 1 मई तक भी अगर कस्टमर ने कोई बैलेंस ट्रांसफर किया है मैं वो कंसिडर कर लूंगा फॉर बैलेंस. एंड 1st May से T+7 days 8th May तक और भी जो पैसा कस्टमर ट्रांसफर करेगा इन द एक्सिस बैंक अकाउंट, मैं वो भी पैसा काउंट करूंगा टू कम अप टू दिस स्लैब, टू डिसाइड ऑन दिस स्लैब. सो फॉर एग्जांपल इफ द कस्टमर ओपन्स एन अकाउंट ऑफ 1st of May, एक्सिस डायरेक्ट अकाउंट ऑन 1st of May, और he or she is a mapped customer, और आपको पता है कि यार 2 लाख या 4 लाख या 50,000 या 80,000 उसने अभी कहीं और से ट्रांसफर किया है 26 अप्रैल को या 20 अप्रैल को, तो यू ऑलरेडी नो कि ये कौन से स्लैब में तो कस्टमर फिट हो रहा है. प्लस अगर आपको उसको हायर स्लैब देना है तो यू हैव अनदर 7 days वेयर द कस्टमर कैन ट्रांसफर फंड्स. ठीक है, ये आपको समझा? T-15 एंड T+7 एक्सिस डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग के 15 दिन पहले और 7 दिन बाद जितना भी फंड ट्रांसफर किया है कस्टमर ने, वो फंड ट्रांसफर को मैं सम अप करूंगा और यहाँ पे जो भी स्लैब में कस्टमर बैठेगा वो मैं कंसिडर करूंगा.
So some a customer would have transferred say 20,000 कभी, उसके बाद उसने 2 दिन बाद 30,000 किया, उसके बाद उसने 20,000 किया, उसके बाद उसने 40,000 किया। वो जितने भी ट्रांजैक्शन उस 22 दिन में हुए हैं, इनकमिंग ट्रांजैक्शन, और वो समझो सम अप होके 3 लाख या 3.5 लाख हो गया, तो मैं उसको 3 से 4 लाख के स्लैब में डाल दूंगा। One question here, Abhishek here. I think, you know, what, how I think I should position this product basically to the customer primarily is that they get MOT triggers, RMs receive triggers, where 5 lakhs and above credit or debit has happened on the account. So whenever there's a credit that has happened in the account, and if the credit is of 5 lakhs, which has come from a different bank account, this is a great opportunity to build a conversation there with the customer saying that, sir, you have received a credit of 5 lakhs. I wanted to let you know that there is a new offering from Axis Bank where we are offering a freedom plan for you. And for the credit you have received, you will receive a lifetime free brokerage up to 10,000 rupees. Right? So that becomes a selling point out here, positioning. Yeah, correct, Abhishek. Just wanted to change a word. You will get a 10,000 worth of discount from Axis Securities for 4 months. For 4 months, correct. 3 months. 3 months. And a lifetime discount on brokerage worth 40%. Correct. Yeah. Okay. So now, glad Abhishek, this is a great tool you should use to position the this thing. So whenever in Siddhi you get a MOT trigger of 5 lakh rupees, and you know the customer has the potential or is probably trading with somebody else, you can use this as a pitch to move the customer to your you know, solution out here. One more thing, you know. Thanks, Subin. Thanks. Now, just in continuation, thanks to you, you took out a valid point. I was talking to PBRMs of you know, South 2 and West 2 region last month. What I have found is, you know, if somebody can answer, what's the biggest challenge, you know, in the finance industry today, from a sales perspective? Anyone, I mean, any couple of answers. The biggest challenge that a sales guy faces in financial industry today. To procure मेरे पास तो business. जीरो था, मैं क्यों वो उस पे आता हूँ मैं, जीरो डाई में क्यों आता हूँ, लेकिन आपको जनरली छोड़ दो एक्सेस सिक्योरिटीज, आपको आपके कोर प्रोडक्ट के लिए भी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ आती है? Acquisition. Rejection only, sir, we are facing. Whatever I have understood. We have one fund manager or. Sir, there is a competition in every product that in which we are dealing. Done. ठीक है, thank you for the answer. Guaranteed product. What I have figured out from my communication with South 2 and West 2 PBRMs was the biggest challenge is to get an appointment, especially from the map book customers. Appointment नहीं मिलता है, ये सोचते हैं कि ये अगर मिलेगा तो इंश्योरेंस के लिए बात करेगा, whatever. Correct? I'll tell you how Axis Direct will help you in seeking an appointment. Okay? Now, like Abhishek rightly said, there is a trigger whenever a 5 lakh debit credit happens. मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि आपका मैप बुक कस्टमर है, and I think typically every PBRM would have about 200 to 250 clients mapped, right? आप अगर उसको फोन करके ये बोलो कि सर मैं आपको फ्री एक्सिस डायरेक्ट डीमैट एंड अकाउंट देने आ रहा हूँ, मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आज का जब ट्रेड करो, जब मन करेगा तब ट्रेड करो सर, लेकिन मैं आपको फ्री डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, एक मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ फ्री में, जहाँ पे आपको कोई भी जो भी प्रोडक्ट आपको करना है आप प्रोडक्ट कर सकते हो, जब आपको करना है कर सकते हो, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में मैं वैसे भी कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद if you know that this map customer has transferred some amount in last 15 days, है ना, तो you already know कि आप उसको free brokerage and lifetime discount ये भी आप pitch कर सकते हो, ठीक है? आप एक्सेस सिक्योरिटीज को प्रोडक्ट मत कहिए, आप उसको कहिए सर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ फ्री में, बिकॉज यू आर अ प्रेस्टिजियस कस्टमर ऑफ अस एंड बिकॉज एक्सेस डायरेक्ट इज आवर एक्सिस बैंक का सब्सिडियरी कंपनी, वी हैव व्हाटएवर, आप टाइप बोल दो जो भी बोल दो, मैं आपको फ्री डीमैट अकाउंट दे रहा हूँ, फ्री ब्रोकरेज दे रहा हूँ इतना और फ्री आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट दे रहा हूँ, आपको जब यूज करना है करना, ठीक है? इन दिस केस इफ द कस्टमर इज विलिंग टू गिव यू
अपॉइंटमेंट आप उसको फ्रीडम प्लान समझाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसको फ्रीडम प्लान में ऑप्ट करवाओगे। और अगर इफ द कस्टमर लाइक्स प्लान और वो और भी बैलेंसेस ट्रांसफर करने को रेडी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बैलेंस से उसको ट्रेड करवाओ, फिर वो बैलेंस आपके पास है, आप उसको क्रॉस सेल करो, जो भी आपको करना है करो। This is where you can play with your map customers. Now for NTB customers, जो customer आप नए acquire कर रहे हो, again in your case because you are opening a priority account, आपको पता ही है with every NTB priority customer ये तो कंपलसरी देना ही है अब अपने को। 5,000 रुपए का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिल रहा है, लाइफ टाइम 40% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। बट इफ देयर इज अ एनटीबी कस्टमर, मैं बोल रहा हूँ आपको नया बैंक अकाउंट खोलना है, आप किसी कस्टमर को अप्रोच करो, वो आपको ऑब्वियसली 2 लाख, अगर वो प्रायोरिटी कस्टमर है 2 लाख की बात करेगा। आप अगर उसको भी ये फ्रीडम प्लान एज अ बंडल्ड प्रपोजिशन पिच करोगे ना कि सर आप 2 लाख दे रहे हो, अगर आप 5 लाख दे सकते हो तो आपको हायर डिस्काउंट मिलेगा, आपको 3 लाख पे अलग स्लैब है, 4 लाख पे अलग स्लैब है। इफ द कस्टमर इज विलिंग टू ट्रेड इन द मार्केट और इन्वेस्ट इन द मार्केट, प्रोबब्ली आपको वो higher initial margin check देगा। अच्छा, if the customer is not willing to open an account with Axis Bank, this is your challenge, not Axis Securities challenge, but I'm just figuring it out. आप तो कस्टमर को पिच करोगे एक्सिस बैंक अकाउंट, कस्टमर बोलेगा मैं एक्सिस बैंक अकाउंट क्यों खुला, मैं कोटक में जाता हूँ, एचडीएफसी में जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ। आप बोलो सर मैं आपको सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं दे रहा। ऑब्वियसली विद व्हाटएवर प्रिविलेजेस अ प्रायोरिटी बैंक अकाउंट होल्डर गेट्स, वो तो सभी जगह पे मेरे ख्याल से सेम ही होगा। आप उसको बोलो सर अलॉन्ग विद दैट मैं आपको फ्री में एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको अपफ्रंट ही डिस्काउंट दे रहा हूँ on brokerage, no hidden charges, nothing doing, कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना है। आप वैसे भी 2 लाख ट्रांसफर करने वाले थे, आप 2 लाख ट्रांसफर करके ये अकाउंट खुलाओ, मैं आपको 5,000 का, चलो सर बिकॉज आई वांट यू टू हैव अ रिलेशनशिप विद मी एज वेल एज द बैंक, आई विल गिव यू 5,000 रुपीस वर्थ ऑफ ब्रोकरेज डिस्काउंट एंड मैं आपको लाइफ टाइम सर 40% डिस्काउंट करके दे रहा हूँ। This can be bundled as a proposition to acquire NTB customer, NTB saving accounts. And that works well for both of us. Just think about it. I mean, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो एक्सेस प्रोडक्ट मत बताइए, एक्सेस को एक प्लेटफॉर्म बताइए एंड फ्री दे रहे हैं हम, शायद अपॉइंटमेंट मिल जाए और उसके बाद फ्रीडम प्लान पिच करके अगर बैलेंस बढ़ा है तो बैलेंस बढ़ा लीजिए। This will not, in fact, this is only going to increase your CASA balances, and this is only going to help you acquire new accounts as well as give you an opportunity to cross sell. You can sell the other products as well, right? See, here RMs, you have a target now of early cross sell within the first 30 days of the account opening. So the moment you open an account, within the first 30 days, you have to cross sell one new product to the customer. This is a great opportunity. The customer has already opened the account. It's a very easy fix for you to try and lure him to open an account with giving him large discounts. So the platform is available without any charge. The discounts are also available, which the customer can use, and you are getting your one extra product sale as well, right? So open it along with the new account opening. This will give you much more push, basically. And sir, how many IPG points will be getting? IPG remains the same, 4 IPG. 4 IPG for a freedom plan because we are not taking any advance money or something. We're just opening an account and customer is transferring money to the bank account. Right? But subsequently, because these kind of customers have a better percentage of trading or investing, you can expect a lot of T plus 11th में brokerage generation. Yes, sir. Yeah. Okay, so I just give you a brief. We had launched this product on 16th of Feb. Till 16th of April, that is in 2 months, about 4,000 freedom plan have been acquired pan India, and around 65 plus CR of SA balance has come through freedom plan. This is pan India data. Obviously, February, because we had launched it, it was a slow start, and March, we all know how March generally goes for Axis Securities. But said that, this is the power of this plan, and while we are focusing on the number of freedom plans, we are also having a close eye on what kind of SA balance are we bringing into the bank.
So these MISs are being floated regularly by Sunil Mankotia, who's our SPOC. Just check for these kind of MISs also, you'll get an idea. Yeah, but honestly, Jubin Amit sir. Yeah. I have one question. कि someone मतलब कोई नया कस्टमर मैं लेके आता हूँ और उस कस्टमर से हम लोग अकाउंट में या मतलब ईटीबी कोई भी है उस पर्सन से हमने पैसा डलवा लिया और देन वी कैन ओपन द अकाउंट विद 10,000 स्कीम. हेलो, तो उस केस में भी उसको दोनों का बेनिफिट मिलेगा? वो क्यों लेगा ना, अगर वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहा है तो उसको तो 1 पैसा और 10 पैसे का ब्रोकरेज मिलने वाला है, प्लस उसको 25 लाख 10 पैसा मिलना है, बट वो एक लिमिट है ना 25 लाख तक का. नहीं 25 लाख तक तो मैं ब्रोकरेज ही चार्ज नहीं कर रहा हूँ, और 25 लाख के बाद उसको मैं जब तक उसका वो 1 साल का टेन्योर बाकी है, मैं तब उसको 1 पैसा 10 पैसा दे रहा हूँ. तो 10,000 वाला या 5555 वाला बंदा फ्रीडम प्लान नहीं लेगा ना, वो तो ये बोलेगा कि मैं एडवांस ब्रोकरेज भी दे रहा हूँ. Okay, मतलब this is complimentary only. This is a main product, सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री हो गया अभी, क्योंकि यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे say I should not be propagating this to you guys, but मैं ये बोल रहा हूँ एज अ कस्टमर, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ट्रेड करूंगा उसी के लिए मैं पैसा खर्चा करूंगा ना, मैं अपफ्रंट कुछ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ मेरे दूसरे बैंक से मेरे इस बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप, मेरा इक्वेशन मेरे आरएम के साथ अच्छा है, प्लस मुझे भी मार्केट में आगे जाके अगर ट्रेड करना है, मैं ट्रेड करूंगा विद 40% डिस्काउंट. एंड फॉर एनटीबी, जस्ट रीआइटरेटिंग, अगर कोई एनटीबी कस्टमर है, मतलब आपने 1-2 दिन पहले ही उसका बैंक अकाउंट ये ओपन किया है, तो पहले तो अगेन एनटीबी को तो प्लीज हर एक एनटीबी को ये पिच करना आप फ्रीडम प्लान, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 5,000 का क्रेडिट मिनिमम उसको मिलने वाला है. बट अगर किसी कस्टमर का आपने पिच नहीं किया, उसका अकाउंट खुला है अभी 2-3 दिन पहले, तो ऑब्वियसली आप वहां पे भी उसको पिच कर ही सकते हो एनटीबी कस्टमर को, बिकॉज हम T-15 और T+7 का विंडो दे रहे हैं. ठीक है, देयर इज आई मीन जो मैंने अभी तक कवर किया प्रोडक्ट वैसा ही है, बस उसमें जो थोड़ी छोटी निटिग्रिटीज है मैं आपको डेक शेयर कर दूंगा. And please get in touch with your mapped ASL resources, my cluster managers, circle managers, regional managers, and Abhishek of the call. I mean, we will also have to plan at region circle levels, because these are the things which will really help PBRMs get the kind of revenues that Rajnikant did last year. Right? Guys, am I audible? So we will come to our next product. Yes sir. Yeah, this is a CRM path, वो आप समझ ही लोगे, यहाँ पे जाके आपको CRM करना है for freedom plan. Okay, all right, so we have covered why Axis Securities, or what does Axis Securities offer, what are the IPG points, then we came to subscription plans, then we saw how freedom plan works. Now there's another very very loved plan, I'll say, or very likable or liked plan by bank last year was Smart Edge AI. Smart Edge AI is artificial intelligence. This is our in-house product, which starts with the minimum investment of 2 lakhs, right? So in layman language, what you can say is this is a PMS which starts with minimum of 2 lakh rupees of investment, right? Smart Edge is a machine-based technology wherein about 15 lakhs or 1.5 million data points have been fed into the system, and whatever ranking or grading and everything that the research team would have decided, the machine generates a portfolio or a model portfolio of 15 to 20 stocks, right? It is all data driven. There is no human bias, no human interference, as in कोई मेरा रिसर्च वाला ये नहीं बोलता कि नहीं मुझे पता लगा ये स्टॉक अच्छा है तो उसको पोर्टफोलियो में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज मार्केट में जैसे क्वांट मॉडल चलता है, दिस इज सिमिलर टू अ क्वांट मॉडल पोर्टफोलियो. Smart Edge में we as of now have 2 kind of portfolios. One is aggressive and one is balanced. Aggressive, as the name suggests,
invests more into large caps and mid caps, and balanced is thoda sa conservative, where it is large cap and blue chips, lesser of small caps and mid caps. Right? 4,999 or 5,000 is the subscription fees, and the investment starts with 2 lakhs. So customer jisko Smart Edge lena hai, that can be given to a ETB customer or a new customer as well. हमको उससे 4,999 rupees as a subscription fees देना है, and he has to, the customer has to invest 2 lakh rupees. यहाँ पे every quarter में एक rebalance होता है, जहाँ पे, so if you guys are aware and more market savvy, we have quarterly results in the market. Every company has to show or declare results every quarter, Q1, Q3, Q2, Q3 and Q4. So ours is the only portfolio wherein हम क्वार्टर एंड में पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं करते हैं. हम जैसे फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, these are the 4 months where we do our balancing. Our logic is once the quarterly results are out, so generally all the quarterly results are out by the second month of the quarter. Once the quarterly results are out, we obviously have a better and clear picture of, you know, where did the company stand and what is the company's financials looking like. On basis that we do our rebalancing. So four balancing in a year with a subscription fees of only 4,999 and an investment as low as 2 lakhs. Right? This is how the basic logic behind stock selection is. Low volatility, low beta, value, growth. So we would not probably want a stock with a very high beta, or, you know, with a obviously bad management, or low volume stock. That all gets eradicated with that 1.5 million data points that we have. And basis, if it is an aggressive portfolio, obviously there will be some changes in the data mining, and if it's a aggressive portfolio, there will be some changes. So basis that, we have our 2 strategies. Last year, bank did 85 CR worth of Smart Edge AI in just 7 months, which is pretty awesome. We are not expecting AI to be sold at such a large scale, because we bought this product in the month of July. So 85 crore of Smart Edge AI is what bank did last year. So these are the returns, updated returns till 30th of April. Now see, the markets have not been good. And again, I am not defending anything. The markets have not been good since January. Yes, in the last couple of weeks, we have seen Sensex and Nifty rebounding. This is the returns of Smart Edge AI vis-a-vis benchmark. So the upper row is what the Smart Edge has generated the returns, and the bottom is the benchmark, is Nifty 500. So in 1 month, if the benchmark is given 4.58%, Smart Edge AI is given 3.78%. In 3 months, 2.2, we are at 1.2, and so on and so forth. In a year, Nifty has given 4.4% returns. We have been at minus 0.27%. But if you see the CAGR since February 14, 30% is what Smart Edge aggressive portfolio has generated vis-a-vis 14% of benchmark. So we are double of what the benchmark has given. These returns, trust me, I can share for the month of February, Jan, December, November. All this was double of what the benchmark had given. Obviously, there is a fall in the market, and as I said, we do not churn our portfolio every day or every week or every month. So if we are invested in the month of Feb, we'll stay invested till May. The problem is when we start churning as per, or we start rebalancing as per the market events, the customer has to bear the brokerage brunt, and we will not be able to give or make that kind of returns which we are assuming that we want to make. Right? This is the balance AI returns in a month. Benchmark was at 4.58%. We are at 4.43%. 3 months benchmark was at 2.02. We are at 2.4. And again, CAGR since 2010, 11.5% is what the benchmark has given, and we are again double here. We have given 23.19% as returns. Right. This is
a great product to sell, especially for priority customers, wherein the customer who either does not have time or does not have knowledge of the market, or the combination of both, but wants to invest in markets. Equities, as we all know, historically are the highest return giving assets in the country. Somebody who can have time with a lesser amount can invest into smart edge AIs. A lot of bank leadership have invested in smart edge AIs and have got decent enough returns. You can pitch them if they do not have higher funds to invest. Obviously, if they have higher funds to invest and want a managed account kind of a product, then we also have Cat 3 of 20 lakhs and PMS of 50 lakhs. But this is an easier product to pitch in with a smaller amount, smaller margin, and returns which are considerably better than the benchmarks. And if the market stays like this, I think May month's returns would be much better than what we are seeing currently. Right. So this was a quick rejig on Smart Edge AI. Now we also have our account opening journey. I am afraid I would not be able to take you along all the journeys. How do you want to do it? We have another 20-25 odd minutes. Either we can take question answers, or I'll just run through you all the account opening journeys. Sir. Hello. Yeah. It's better to go run the slides, sir, briefly or just fast if possible. Okay. As I said, we have 4 digital onboarding journeys. Sign App, which is a app with all the bank resource. I mean, it is on your mobile. IBMB is where the customer logs into internet banking or mobile banking portal and opens the account. DIY is do it yourself through our website. And Visit, which is a 3-in-1 journey with the World of Opportunity page. Just a couple of clicks and the Demat account also gets open. And we have a e-form, the classical e-form available as well, which now contributes only 3 to 4% of the entire number of accounts that we open. IBMB, I'll have to. I'm just checking if I can do the slideshow because. Sorry. Is my screen visible now? Visible. Yes, sir. Yes, sir. You can see you can see it moving. You can see the ASL opening account opening suit. Yeah. Okay, thanks. Yes. So account opening through IBMB here. This is how obviously the customer's mobile page looks like when he or she tries to log in into the internet banking. User ID, password. This is how the customer's dashboard looks like on the website. It's not moving. Not moving, sir. Not moving? We have a still first page of account opening through IB or MB. That's it. Not moving at all? No, it's not moving, sir. Yeah. It's congratulations, welcome to Axis family now showing. That's it. So the entire presentation went away. Okay, I'll just explain you orally because there is some effects which I wanted to show. Yeah. So here the customer logs in into his or her internet banking page. Now, as such, because you are not able to see the screen, let me just see the screen just a second. Yeah. So on the internet banking or the mobile banking page, after the customer has opened the page, there is a dashboard. In the dashboard, because if the customer clicks on investments, online investments, the customer sees 4 to 5 options like digital gold, sovereign gold bond, gold bond, PPF, national pension scheme, and there is an option called Demat. So if once the customer selects on Demat, the customer will be given a welcome, shown a welcome page saying that hi XYZ, we'll be verifying your KYC details. For that, I need your PAN and date of birth. So if the customer is CKYCY customer with bank, the name will be fetched as per bank records. The customer just has to view
customer will not be able to edit anything. Customer just has to check as to, the name, the address is all okay, and everything is as per the bank records. Customer has to just click on proceed. Then the second page that comes is about the personal status, marital status, residential status, father's name, mother's name, which again are pre-filled because they have come from bank records. If the customer is CKYC-Y, which generally are. If the customer is CKYC, no, customer has to manually fill in and proceed. Then the customer will be asked. Then comes the product page. Now this is important. When the customer comes on product page, and the product, the customer can select any of our subscription plans, 1500, 5555, or 10,000, or the customer can opt for a freedom plan. And if the customer does not select anything, then by default the customer is mapped to a Axis Direct Prosperity account, which is nothing but the charges wala account. 499 will be deducted and 50 paisa and 5 paisa will be levied to the customer. Once the customer does that, now this is an important step. This is an important step across all our journeys, is signature and IPV. So obviously we know that we get the signature details from the bank records as well, but we, as per the SEBI guidances, we have to take another signature on a plain paper. The customer has to sign, take the photo and upload the signature. Once the customer does that, the customer will be taken to a IPV page. Here, I think as in your VSIP journey as well, customer has to take a live selfie with the location to be on the mobile settings. Once the customer takes a photo, and unless and until the photo is as per the guidelines, the customer will be asked to take the photo once again. Once the customer takes the photo, that's it. Customer will be taken to a e-sign page. The customer has to just do e-sign. OTP will go to the customer. Customer gives the OTP. Customer's bank account has been opened. Demat account has been opened. So the entire journey, if the customer is a CKYC-Y customer, the entire journey is not more than 3 to 4 minutes. The only time that the customer will have to take is for that signature upload and a live location selfie. Again, if the customer is tech savvy, it won't take more than a minute. 29% of the accounts that we opened last year was from IBMB. This year that has increased to 33%. So IBMB is where the push is, VSIP is where the push is. And at ASL, we believe if the customer has come through an IBMB mode, there are chances that the customer would be a trader or would be an active customer, because the customer has taken an effort to open an account. And if this kind of customers come, again, for you, if the customer is mapped to you or sourced by you, there is a chance of T plus 7 months of brokerage. Right? Just coming to VSIP. So anybody Sir, not audible. You're not audible, sir. Not audible, sir. Audible now? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, You're sir. audible. I was saying this was the last screen for in VSIP for bank account opening journey. After that, the next screen is this screen,
Wherein on the right, you see World of Opportunities. You click on that. So that is open a Demat account online. You click on that. These are the three pages that you have to just select and click. I mean, these are basic questions. Do you have a trading experience? Are you a politically exposed person? How many years of experience? Do you trade with other brokers? That's it. 2 or 3 clicks and you have to just submit here. The application is... Sir, can you go back to previous slide, sir, so that we can know where to click this on? This one, yeah. Here we should click open account online, that one, sir. You have to click on this image or on the CTA button that you have. Open account online. Okay, thanks. So there are a lot of other features. There are credit cards and other options also, but this boy with the clock in his hand is where you have to click for Axis Securities. Yeah. So post that, couple of about 4 or 5 clicks, and the application gets successfully submitted. Now post that, what happens is bank account gets opened and say T+1 day. Once the bank account gets opened, we get the details of the bank account, and if there is no rejection, subject to there is no rejection in the bank account opening journey, we get the details. We send a e-sign link to the customer, because over here the customer has not done e-sign, and e-sign is mandatory now from SEBI's guidelines. So you bank, because it follows RBI, we as brokers, we have to follow SEBI. So we then send a OTP to the customer for e-sign. Once the e-sign is done, the customer account gets opened. So VSIP is a lost opportunity so far, because only 4% of the accounts are not even 4% of the accounts are opening through VSIP. But if you guys are already opening a lot of accounts, bank accounts through VSIP, just not even a minute of effort will give you 4 upfront IPG points. So try and use VSIP. I'll again share another deck with a step-by-step VSIP journey, so that you can go through it once whenever you want to pitch VSIP or open an account through VSIP. Then we have Sign App. See, Sign App, I hope most of you have it on your mobile, and if not, then that's a worrying sign again. Is the 66% of the accounts got opened through Sign App. So Sign App is what bank resources like to use for account opening, because they have the control. It is in their mobile phones through which they open the account. Sign App is a very easy and convenient way of opening the account. Again, similar to what IBMB is. If the customer is CKYCY, a lot of details will be pre-filled. So all these slides, these will be pre-filled. Here the customer will have to select the plan, like you see here. It is because it's a relatively older slide, you would only see 5544 1500, but 10,000 and freedom plan are also included here. Customer has to select the plan, make the payment. So if the customer has selected a 1500 plan, here he has to do the payment. Payment can be done through debit card, internet banking, any wallets, any UPI. Once the customer does that, again, if the customer is a CKYCY customer, documents need not be uploaded. Documents will fetch it from bank. If the customer is a non-CKYC customer, he'll have to upload the documents like the address proof or the cancelled check, and so on and so forth. And once the customer has done that, the link takes, there is a OTP that he or she has to provide for e-sign. Once the e-sign is done, the account gets open. The best feature of this Sign App is, if you are obviously you're a bank resource. If I am a bank resource, I can see the applications that I have registered to Sign App. I can see the live status of my applications. Like here we see 1 is rejected, 9 is already insta activated, 5 are in progress. Then why is it rejected? Why is it rejected? What stage of progress is my form? Everything you get, including the WB number for your CRM entries, everything you get on your mobile app. So Sign App, hence 66% of the accounts get open through Sign App. Sign App is a fantastic tool wherein you are in control of
the entire journey, and you can also check with your respective ASL resource as to if there is a form that is stuck for a while, or if there's a rejection that is stuck for a while, you can easily sort it out. So these were our 3 digital account opening journeys. Obviously DIY, because it's a do-it-yourself. There is no control that you or I will have on that, so I'm not showing that. Then we have our award-winning research. We have a very good research team. In fact, sir, may I know? I have a question. VSIP for NTB customer. VSIP is only for NTB customer. VSIP is only for NTB. Okay. Yeah. I'm saying our Axis Alpha calls have given more than 100%. I mean, are at 100% strike rate with more than 140% returns, and I think this has been a trend since almost 2.5-3 months now. Right. So our research has been good. In fact, our CAT3 strategies have been number 1 or number 2 across all the PMS strategies since last 6-7 months now. I'll share all those details in a deck with you guys. So we are very confident on our research as well. And lastly, just to reiterate on whatever we tried to cover in the last 2 hours, 4 IPG points on every Axis Direct account opening, 1 IPG for T plus 11 months on every 1,000 rupees of brokerage with a continuous source of broking revenue. Asking your customer, a priority customer, to open an Axis Direct account increases product per customer or customer stickiness, because the customer then starts investing a bit more, or putting in money into other products like bonds, say a Smart Edge, say a mutual fund. Client appointment for a free Axis Direct account opening provides you cross-sell opportunities. Like I said, if to a MAP customer, just because there is a fund transfer that has happened, he or she is eligible for a free discount or a lifetime discount because of Freedom Plan, just pitch him Axis Securities not as a product but as a platform without any charges, and that can give you an appointment as well to cross-sell. And that also leads to higher AQB, because historically a standalone Axis Bank account has a balance of about 73,000. What we have seen is, with an inactive Axis Direct, I'm saying an inactive Axis Direct account linked to the standalone Axis Bank account, the balances are 93,000. So from a only standalone Axis Bank account, the balances are 73. From linking it to an inactive Axis Direct account, inactive is where the customer is not traded, still the balance is risen to 93. But with an active Axis Direct account where the customer is trading actively linked to Axis Bank account, the balances are 1.23 lakhs. And that is not what I am saying, that is the data that we get from bank. So Axis Securities as a bundle proposition helps you increase your SA balances, helps you reduce your SA balances by a very minimum amount, and give you the best IPG points across all the third-party products. A classic example is 9.5 IPG points for a 5555 plan. That is just 5,500 rupees of depletion. आपके SA balances सिर्फ 5,500 रुपए कम होंगे, आपको 9.5 IPG points मिलेंगे, और वो कस्टमर अगर ट्रेडर है वो आपको 12 महीने तक बाद में ब्रोकरेज भी देगा. ट्रस्ट मी गाइस, एक प्रायोरिटी कस्टमर अगर आप लेके आते हो, हमारी डीलिंग टीम अगले दिन उसको फोन करती है, अगले दिन उससे अपॉइंटमेंट जनरेट करती है, उससे मिलती है. If the customer is willing to, tries to understand what kind of customer he or she is, and then the kind of service that the priority customers get, brokerage banega. But what we want is you to get in good customers and in larger numbers. That is what we want. The floor is open. Any questions, please? Sir, one priority customer, he wants through ASAB, I don't know what is that, blocking system. He wants to invest in IPO through blocking system application. He wants to block. ASBA. Yeah, correct. So every IPO that we have now goes through ASBA only. Okay. So one of the customers, sir, so I'm just look of 3 who in my circle who is the guy of Axis Direct. You're from which circle, brother? You're from which circle?
South, Bangalore 3, sir. South one. Bangalore 3. Okay. Yeah. So you can, I mean, for all, not only for you, but for all you out there, do you know who's your mapped ASL resource? I mean, has any of the ASL resource of your circle or cluster or region, anybody have met them? No, sir, not yet. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. So you can very well get in touch with the map resource. The account will also get opened and ASBA से IPO भी हो जाएगा. Can you provide Hello? I can ask my branch head, yeah. Hello? Hello? Yeah. Hello? Sir, sir? सर बोल रहा था जब when we'll position for this, मतलब जब कस्टमर के पास जाएंगे इस for Axis Direct, कुछ ऐसे पॉइंट्स मतलब क्या स्पेशल है जो हम बोल सकते हैं कि ताकि USB पॉइंट्स क्या बोल सकते हैं, मतलब देखो सबसे पहले तो स्पेशल, सबसे आपका नाम क्या है? इंद्रजीत रॉय. तो सबसे स्पेशल ये है ना कि तुम जा रहे हो और तुम प्रोडक्ट पिच कर रहे हो एक्सिस ग्रुप का, है ना? दैट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग. सेड दैट सी डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, अभी वो कस्टमर का माइंडसेट क्या है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो एक बैकग्राउंड अगर हो तो काफी अच्छा है, अगर नहीं हो तो फिर आई थिंक यू नो सी वन इज इट्स अ ग्रुप कंपनी. I would not want to take names, but a lot of big brokers have gone bust in last 2-3 years. I mean, Karvy is one of the biggest shocker that we have. A lot of standalone brokers have gone bust. एक तो सर Banklet broker है, 100% subsidiary of Axis Bank है. Sir, we have our platforms जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो. आपको अगर आप डिजिटल टेक सेवी हो तो सर रिंग ऐप है हमारे पास, या आप वेब से कर सकते हो. एंड सर बेस्ट पार्ट इज along with both these apps you will have a dedicated dealer map to you. तो आप कहीं समझो कहीं आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आप डीलर को फोन करो, डीलर आपसे तो वैसे भी टच में रहेगा. When it comes to brokerage, see, brokerage is something that is very sensitive and depends on customer to customer. Somebody would, not want you to pitch in a lower brokerage, that sometimes hurts ego, and somebody would probably have got an offer, especially in states like Gujarat and Madhya Pradesh and Rajasthan, jahan pe we would never be able to match their brokerage. But just to pitch in, sir, we also have very competitive pricing as far as brokerage is concerned. Jaise ki sir, we can go as low as 1 paisa and 10 paisa in our intraday and delivery. And option में तो सर we are as such cheaper than a lot of other discount brokers. हम 10 रुपया पर ऑर्डर दे रहे हैं, जहाँ पे आज बड़े से बड़े डिस्काउंट ब्रोकर 20 रुपया पर ऑर्डर दे रहे हैं, राइट? सो अगर ऑब्वियसली फिर इंटरेस्ट जाता है एंड इफ द कस्टमर से बताओ अब 1 पैसा 10 पैसा कैसा मिलता है, तो फिर तो 10,000 का एडवांस ब्रोकरेज लेना पड़ेगा उसको. बट टू बी सेफ, अगर मैं अपने आप को ऐसे प्रपोजिशन ऐसे पिच कर रहा हूँ जहाँ पे मैं 1 पैसा 10 पैसा और 10 रुपया पर लॉट या पर ट्रेड इन ऑप्शन में पिच कर रहा हूँ, आई थिंक ऐसा कॉम्बिनेशन बैंकलेट ब्रोकर के पास ज्यादा है नहीं. I understand there are a few new offers that ISEC is also bought in, but then we cannot match offer to offer. And also one more thing, I'll be very open on this forum. मैं confidently तुमको बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर है, बड़ा कस्टमर है, जिसको जो करंटली जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बारिंग द डिस्काउंट ब्रोकर्स, उसको ब्रोकरेज कम है, हम मैच करके दे देंगे उसको ब्रोकरेज. हम कम नहीं कर पाएंगे लेकिन हम मैच कर देंगे ब्रोकरेज. सर इसमें एम्प्लॉय कोड कहाँ पे आएगा? क्या सर? एम्प्लॉय कोड सर मैं अरविंद बोल रहे थे, एक्सपोर्शन सर. हेलो, एम्प्लॉय कोड कोई पूछ रहा था? हाँ सर, मैं आई थिंक गौरीश. हाँ गौरीश, एम्प्लॉय कोड हम सर सीआरएम ही करना है ना तुम्हें सीआरएम करना है, एम्प्लॉय कोड तो वहीं से होगा ना. अच्छा, जैसे मोबाइल बैंकिंग खोलते हैं आईबी या एमबी से खोलते हैं, तो उसमें कहाँ पे देखो उसमें एलजी कोड
हमने दिया हुआ है, ठीक है। अगर समझो आपका कोई कस्टमर है, वो बोलता है कि गौरीश मैं इंटरनेट मोबाइल से खोल दूंगा, आप उसको बोल देना सर LG कोड में मेरे एम्प्लॉय कोड डाल देना। लेकिन अगर गौरीश उसने नहीं भी डाला, वो भूल भी गया, ठीक है, उसको तुमको रिक्वेस्ट करना है कि सर मुझे बाद में वो बारकोड नंबर देना, क्योंकि वो बारकोड से आप CRM करो, है ना। अगर वो LG कोड नहीं डालेगा दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन CRM आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उससे बारकोड लेना पड़ेगा। नॉन पोर्टफोलियो कर सकते हैं, WB नंबर आएगा, WB नंबर आपको लेना है उससे। सर नॉन पोर्टफोलियो कस्टमर का भी कर सकते हैं, नॉन पोर्टफोलियो कस्टमर वो क्या होता है नॉन पोर्टफोलियो वाला? मतलब जो हमारे पोर्टफोलियो नहीं है यार, वो आई एम नॉट द राइट पर्सन, वो बैंक बता पाएगा यार, वो आपकी मैपिंग कैसे होती है और आप कौन से कस्टमर से बात कर सकते हो, वो मुझे नहीं पता। ओके सर। हेलो सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए कोई ETB कस्टमर है, उसका हम 5555 प्लान दिया है, उसका हमको 9.5 पॉइंट मिला है, उसके बाद उसको जो 2 लाख वाला जो आपने बोला स्मार्ट एज में क्या प्लान है ना, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर को बोल सकते हैं 2 लाख आप दे दीजिए, ऑटोमेटिकली हम लोग उसको फंड को। मिश्रा जी सारे PBRM यही करते हैं कर लो। हेलो, तो यहाँ पे 9.5 IPG मिलेंगे, वहाँ पे 9.5 IPG मिल जाएंगे, 55 के 4 IPG 5 IPG मिल जाएगा स्मार्ट एज का। और कस्टमर को लेकिन जो स्मार्ट एज में ब्रोकरेज जो चर्निंग होगी ना, फिर वो 20 पैसे से होगी, वो ज्यादा वो 50 पैसे वाली नहीं ब्रोकरेज मिलेगी। तो इस केस में आपको IPG अपफ्रंट ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन शायद वो 12 महीने की ब्रोकरेज उतनी जनरेट नहीं हो पाएगी, बिकॉज हमने उसको ब्रोकरेज कम दे दिया ना। तो उसमें क्या फायदा ज्यादा नहीं है? मतलब 2 लाख अगर देंगे कस्टमर के लिए, अगर उसमें फायदा किसमें है? मतलब कस्टमर को फायदा है ना? कस्टमर को देखो ज्यादा फायदा नुकसान नहीं है। कस्टमर का ये है कि उसको जो जब भी वो क्वार्टर हर साल में 4 बार जो रीबैलेंस होगा ना, वहां पे समझो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख बाय 2 लाख सेल, ऐसे 4 बार 16-20 लाख का टर्नओवर होगा, वहां पे उसको ब्रोकरेज नहीं लगेगा। मतलब उसको 12 लाख तक तो वैसे भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसने 5555 का प्लान लिया है। और उसके बाद 8 लाख पे उसको ब्रोकरेज जो लगेगी वो 20 पैसा लगेगी। तो कस्टमर का थोड़ा सा उसमें फायदा है। सर 2 लाख के ऊपर अगर कस्टमर मान लीजिए 5 लाख का लेती है, तो 5 लाख भी कर सकते हैं। आप 50 लाख का भी दे सकते हो, ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना देना है दे सकते हो। लेकिन हम ऐसे सजेस्ट करते हैं कि अगर कस्टमर 20 लाख 30 लाख करने को तैयार है, तो उसको कैट 3 दो, उसको फिर स्मार्ट एज मत दो। कैट 3, ओके थैंक यू सर। एक बार फिर से वाला पेज ओपन करिएगा सर, इंटेलेक्ट एंड एज वाला। एक सेकंड। सर इसमें जैसे कि 2 टाइप के फंड्स थे ना, एक बैलेंस एंड अग्रेसिव। तो अग्रेसिव सर आपने बताया, बट बैलेंस के बारे में नहीं बताया। देखो अप्रोच दोनों की यही है, ये अप्रोच है। अग्रेसिव सर रिस्क एपेटाइट है, ज्यादा रिस्की तो वही है। अग्रेसिव में तो ज्यादा रिस्क है सर। अग्रेसिव में चलो ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा रिस्की ज्यादा है अग्रेसिव ना, और बैलेंस कम है। क्योंकि एग्रेसिव में क्या है ना, कि एग्रेसिव में जैसे कि हम 50 to 55% लार्ज कैप में होते हैं, हम 25 to 30% मिड कैप में होते हैं, और बाकी हम स्मॉल कैप में होते हैं। ठीक है, अब रिस्की ज्यादा मिड कैप होता है, ज्यादा स्मॉल कैप भी होता है, लेकिन जब मिड कैप चलता है तो मिड कैप बहुत अच्छा चलता है। मतलब मिड कैप में वो क्षमता है कि वो प्रोबेबिलिटी ना, चांस है कि इतना होगा, बट इट्स नॉट द श्योरेंस। बैलेंस में तो फिर भी चांस है कि थोड़ा बहुत फंड्स ग्रोथ करेगा, बट ऐसा नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन योर टाइमिंग ऑफ मार्केट। आपने इन्वेस्टमेंट कब किया? अगर पता चला कि आज 18,200 की निफ्टी में इन्वेस्ट किया है, एंड कल यही निफ्टी 20,000 हो गई, तो आप बोलोगे यार मुझे एग्रेसिव लेना चाहिए था।
बट जनरल सेंटीमेंट ये होता है कि अगर 18,200 की निफ्टी में नहीं देना चाहिए, निफ्टी आएगी नीचे, तो नीचे के लिए आप वेट करते हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप एज ए इन्वेस्टर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने ये 2 लाख रुपए डाल दिए, मैं 5 साल के बाद देखूंगा क्या होगा, या मैं 3 साल के बाद देखूंगा क्या होगा, तो हिस्टोरिकली यू हैव टू समहाउ गो इनटू दैट एग्रेसिव काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, क्योंकि मार्केट नेवर मूव्स इन वन डायरेक्शन। वो वी शेप और यू शेप में मार्केट चलेगी, बट यू शेप वी शेप में देन हिस्टोरिकली और लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स वो टर्न अराउंड टाइम जब आएगा ना, तो उनमें अप्रिसिएशन ज्यादा होता है। बैलेंस में यस अगेन बैलेंस भी बढ़ेगा, बैलेंस ऑब्वियसली आपका एक कंसिस्टेंट लेवल का आपको रिटर्न देगा, बट अगर मार्केट ने अच्छा किया जब आप एग्जिट कर रहे हो, तब देयर विल बी अ वास्ट गैप बिटवीन योर एग्रेसिव एंड बैलेंस का परसेंटेज रिटर्न्स। बट अगेन दिस इज सब्जेक्टिव। अगर आप कोई 50-55 प्लस के क्लाइंट से मिलते हो, तो ऑब्वियसली हम उसको बैलेंस सजेस्ट करेंगे, हम उसको एग्रेसिव सजेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इरोजन का उसके पास कोई स्कोप नहीं है। जबकि थोड़ा सा कोई यंग कस्टमर है जहाँ पे वी सी दैट देयर इज अ हायर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, वहां पे आप उसको एग्रेसिव ही पिच करो। Sir, one more thing, that which will be the better one, मतलब accordingly smart is ठीक है या फिर intellect ठीक है सर? सॉरी क्या ठीक है सर? कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से which will be the better one, intellect और smart edge? नहीं, इंटेलेक्ट में ही इंटेलेक्ट में ही दो हैं, एक बैलेंस है और एक एग्रेसिव है। तो तुम पूछ रहे हो एग्रेसिव अच्छा है या बैलेंस अच्छा है? हाँ वही मतलब मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस में तो सर ये है कि चांसेस ऑफ ग्रोथ कम है, बट ये है कि एश्योरेंस है कि थोड़ा बहुत तो उसमें मिलेगा ही। मैं 3 ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उम्र नहीं पूछूंगा। चलो, अगर कल इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल का है, तो आप बैलेंस ले लो, ठीक है? अगर कल इन्वेस्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल 3.5 साल तक का है, तो एग्रेसिव ले लो। और अगर कुछ पैसा शॉर्ट टर्म में निकालना है, कुछ पैसा लॉन्ग टर्म में निकालना है, तो 4 लाख रुपए लेके आना, 2 लाख एग्रेसिव में डाल देना लॉन्ग टर्म के लिए, 2 लाख बैलेंस में डाल देना शॉर्ट टर्म के लिए। वो भी कर सकते हैं। एग्रेसिव में इक्विटी एक्सपोजर कितना है? किसमें? एग्रेसिव में इक्विटी एक्सपोजर कितना है? दोनों में इक्विटी एक्सपोजर 100% है। 100% का 100% इक्विटी एक्सपोजर है। उसमें वेरी होता है ऑन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ओके सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है? मैं सिर्फ मिनिमम सुना अरिंदम, आगे नहीं सुनाई दिया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख 2 लाख सर एज में स्मार्ट एज में Sir, is there any kind of retention period of time कि मतलब कस्टमर को होल्ड करना ही करना है, या इट इज अंडर लिक्विड मोड? नहीं, कस्टमर कैन गेट आउट ऑफ द फंड एनी टाइम दैट ही और शी वांट्स। जैसे एनएफओ में होता है सर, 1 टाइम 1 ईयर का रहता है कि रिटेंशन, उसका कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। यस सर। Any other questions? Okay, so just a parting. All right, thank you, Zubin, for the session. So what stand for AI, sir? AI aggressive AI. Axis intellect. अच्छा। और स्मार्ट एज एआई वो भी वही है? स्मार्ट एज एआई ही पूरा नाम है। तो स्मार्ट एज प्रोडक्ट का नाम है, एआई इज अ वर्जन ऑफ स्मार्ट एज, और फिर उसमें जो 2 हमारे पोर्टफोलियोज हैं, बैलेंस्ड एआई और एग्रेसिव एआई। ओके सर, ओके सर। आई थिंक we are over time now. Vidya, just I'll take 1 minute. Yeah, okay. Just to reiterate that again at the cost of repetition, please, for every priority accounts,
आप साथ में एक्सेस डायरेक्ट डीमैट अकाउंट देना. You already know फ्रीडम प्लान में उनको जो बेनिफिट मिल रहा है, मतलब आप उनको प्रोडक्ट पिच नहीं कर रहे हो, आप उनको एक ऑफर ही दे रहे हो टू बंडल अप, राइट? You use Access Direct to get an appointment with your clients, to even get an appointment for a new bank account as a bundle proposition. And I'll also try, but you also try from your side to get in touch with all the mapped ASL resources, because this is just a 2-hour presentation that I have given. They will have a lot of conversations and communications to do with you. They will also have their own ways of pitching you or telling you the products that we have, and they'll handhold you for every requirement and every need that you will have for Axis Securities. Please do that. We have high hopes from this channel this year, and I'm very sure you'll all do good. And all the best. Thank you, Zubin. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Jubin sir, can you give Thank you, an sir. employee code so you can ask question if Yeah, I mean, I don't know, Vidya. Sorry? Jubin sir, your employee code, if we can further any question, I can mail you. Employee email ID, sir. So I'll just sharing my email ID in the chat. Yeah. Okay, I've shared my email ID in the chat. So if there is anything, you can mail me or you can call me also. मुझे आई वाली बात तो नहीं है ना, आपने हर वाली बात तो नहीं है. I think we can close the call. Thank you so much. Yes. Thank you. Okay. Yeah, hi. Rintu, Vidya. are you around? Yeah, Yeah. I'm there. So we'll go for a break right now, or then after that we'll be starting the next session, right? All right. So it's about 4:45. What time do we come back? Yeah, as of now it is in 4:42, right? So around 4:50 we can start.